Dear students, I would like to present to you a very, very interesting theorem and its proof. आप कहेंगे कि theorem and interesting. Theorem is supposed to be a very difficult thing, but it's actually very interesting. What is the theorem I'm going to present to you? Well, I would like to say to you that the expected value of x2 given x1 is equal to the expected value of x2. यानी इट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग कि एक कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आपके पास है, उसकी आप फिर से एक्सपेक्टेशन ले लें और ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू अ सिंपल अनकंडीशनल expectation. So let's look at it again. And the theorem in the proper way is presented as follows. Let capital X1, capital X2 be a random vector such that the expected value of X2 is a finite quantity. If this is so, then the expected value of x2 is equal to the expected value of x2 given x1. So ये जो थ्योरम है इसको आइए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. We start from the expected value of x2. By definition, the expected value of x2 will be given by the integral from minus infinity to infinity of x2 into h of x2, and the integral is with respect to x2. यानी ये तो बुनियादी डेफिनेशन है ना. अगर एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर उसकी एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नहीं बल्कि दोनों, तो उनमें से एक का जिक्र हम कर रहे हैं. सो बाय द सिंपल डेफिनेशन जैसे होता है e of x is equal to integral of x into f of x dx, उसी तरह expected value of x2 is the integral of x2 into h of x2 dx2. But what is h of x2 equal to? Well, ये marginal है ना, तो जाहिर है कि it is the integral of the joint density function small f of x1 x2, the integral being taken with respect to x1. So therefore, we can write h of x2 is the integral from minus infinity to infinity f of x1 x2 dx1. अब इसको e of x2 का जो एक्सप्रेशन अभी मैंने आपके सामने रखा था उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें. So what do we get? We have e of x2 equal to minus infinity to infinity x2, और फिर आगे वो पूरा जो हमने अभी कहा वो उसमें डाल दें. एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें minus infinity to infinity f of x1 x2 dx1, और ब्रैकेट के बाद बाहर dx2 तो है ही. स्टूडेंट्स, अगली बात ये कि ये जो एक इंटीग्रल है उसके बाद x2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक और इंटीग्रल, तो from basic calculus we know that I can bring that x2 which is in the middle of these two integrals, I can bring it inside, यानी आगे ले जाऊंगी उसको. So what do I have now? I have the double integral हो गया minus infinity to infinity, double integral दो दफा, और उसके आगे x2 f of x1 x2 dx1 dx2. इससे अगली बात ये कि ये जो dx1 dx2 है आप इसका ऑर्डर उल्टा भी सकते हैं. सो व्हाट कैन यू राइट? यू कैन से इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अनदर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x2 f of x1 x2 dx2 dx1. ये मैंने जानबूझ के उनका ऑर्डर चेंज किया है. क्यों किया है अभी आपके सामने आ जाएगा. ये ऑर्डर चेंज कर चुकने के बाद आई एम डूइंग अनदर स्टेप. आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस थिंग बाय f1 x1
the marginal of x1. So if I do that, what do I get? I have now the expected value of x2 is equal to the integral from minus infinity to infinity, पहला वाला. उसके बाद we can put a bracket. और उस bracket के अंदर वो जो दूसरा इंटीग्रल है minus infinity to infinity x2 into f of x1 x2, इसको डिवाइड कर दें by f1 x1 और फिर उसके बाद साथ dx2 ब्रैकेट बंद. और उसके बाद वो जो डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई कर दें by f1 x1 और उसके बाद dx1. But please note that what we have now inside this bracket, this is actually the expression of the conditional mean, yani expected value of x2 given small x1. Obviously, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर expected value of x2 given x1 निकालनी है तो आपको इंटीग्रेट करना होता है x2 into the conditional distribution. तो ये जो मैंने डिवाइड किया था तो ये जो रेशो है, of course it is the equivalent of the conditional, यानी small f of x2 given x1. तो इसलिए ये पूरी चीज it is the expected value of x2 given x1. तो अब फिर दोबारा अपने बेसिक जो हमारा चल रहा है उसकी तरफ आइए. What do we get now? We have expected value of x2 is equal to पहला इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैसे ही लिख दें और अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ था उसकी जगह पे लिखें expected value of x2 given x1 और उसके बाद ब्रैकेट के फौरन बाद जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए f1 x1 और उसके साथ dx1. सो अब जो चीज़ है आप गौर से देखें कि एक इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x1 और उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं f1 x1 से, तो गोया आप उस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू ही ले रहे हैं ना. दिस कैन बी रिगार्डेड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ the expected value of x2 given x1. So therefore, we get our very interesting result. E of x2 given x1 is simply equal to E of x2. I just want you to know that this particular rule or theorem or result, it is sometimes called the law of total expectation and sometimes it is known as the law of iterated expectations. An interesting result.